Hello, good evening, and welcome everyone. Today, me and Recording my in team progress. will brief you on overall performance for the first quarterly results of the FY23. The market participants were eagerly waiting for the Q1 quarterly results from the companies, from the corporates, and it was mainly due to the stringent measures taken by central bank and policymakers globally to control inflation. However, most Indian sectors and corporate outperformed expectations. How they performed, to explain this along with me, my team is here to guide you and to make you more efficient while taking a perspective or any specific decision on this specific sector. Please note, it will reward you in many ways. They will also give you a market outlook and top picks from each sector. So it's not that only we are going to cover the overall outlook, but we are also here with the top picks, top ideas. Also, we are going to discuss about those companies which have outperformed in the previous quarter. And also, we are going to take a number of queries. So in the previous webinar, when we conducted for the monthly market strategy, that time we actually took number of questions and number of queries. I can see that my audience and those who are watching this, they are more curious to know about their questions, their queries, and we are all here to support you. So please stay with us for the entire session, because it is going to remain extremely interesting. All the sectors did means in if we take the overall broader view on the market or broader outlook of the overall quarterly numbers, then they actually surprised us in many ways. And for that, my team is there. So over to Arun. He will start with the first. I'm going to say his view on the Nifty based on the valuations, and also he will cover few segments. Thank you, Shrikant. Good afternoon, everyone. So in today, what we'll do is we'll initially talk about how broadly the results have been for Q1. After that, we'll have a look at some of the stocks which sort of outperformed or underperformed versus our expectations. And post that, we'll talk a little bit about the key macro factors, the market valuations, and then we'll move on to the how the different sectors have performed during Q1. So just give me a moment. I'll share my screen here. Just give me a moment. Okay, so today, overall, if you look at the result season, the numbers were broadly on expected lines, though for different sector, the performance was a different year. But on a broader basis, the numbers were on expected lines. If you look at the Q1 net profit for BSE 30 index, so that increased by 23% on a year-on-year basis. And for Nifty 50 index, the net profit growth in Q1 was 24%. Now, this again, as we talked about, was broadly on expected lines. If you look at the EBITDA level for the BSE 30 index, if you look at the adjusted EBITDA here, they grew by around 21% on a year-on-year basis, and was our expectation was around 22% growth. So broadly in sync with our expectation. And similarly, even Nifty 50 companies adjusted EBITDA grew by 20% on a year-on-year basis. There are a couple of key things that I would like to highlight here. One is that the Q1 results actually saw some margin pressure despite decent top line growth. If we recall last year in Q1 FY22, we had some of the sectors getting impacted because of second COVID wave. So hence the base was low. So on that base, we saw good top line growth for a lot of companies.
However, the other thing that has played out over the past 1 year has been severe increase in commodity prices, and that added to margin pressure for a lot of sectors during the quarter. So gross margins basically of consumption focused sectors were at low levels in Q1, and that largely was because of higher raw material prices. Now, this particular slide, gives a broad snapshot about some of the Nifty companies. Now, these are Nifty 50 non-financial stocks, so this doesn't include banks. And on the left-hand side, we have table where we have jotted down few companies from Nifty 50 where their adjusted net income, how they have performed versus our estimates. So the companies that have outperformed during this quarter was surprisingly from the commodity spaces. We had Coal India, JSW Steel, and even Tata Steel for that matter. And some good names, otherwise from the consumption sector, like or from the autos, we have seen underperforming as compared to our estimates at the net income level. And similarly, even if you look at the adjusted EBITDA performance for these companies versus our estimates, we can see similar names, outperforming and underperforming during the quarter. Like for example, say Reliance Industries. I mean, why the stock has underperformed in terms of or versus our expectation, we'll be covering these stocks during our sectoral part. Coming on to macro factors, now the markets have performed strongly over the past 2 months. आप देखेंगे तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स में काफी अच्छी रैली रही है, एंड इट्स नॉट जस्ट इंडिया मार्केट्स, आप ग्लोबल लेवल पे भी देखेंगे तो इंडिया मार्केट्स में रैली काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छी रही है recent times में. Now, what we think is the strong market performance over recent months probably reflects three points where the market is gaining confidence from. One, एक है कि there are expectations or belief that inflation is likely to have peaked out. Second है moderate rate of growth or rate hikes going forward from the central banks. And the third is limited earnings downside now going ahead. अगर हम इन्फ्लेशन पे देखें तो इन्फ्लेशन लेवल्स पीक से थोड़े रिसेंट जो नंबर्स आए हैं वहां से थोड़े नीचे है, एंड व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग एक्सपेक्टिंग कि इंडिया में नियर टर्म में इन्फ्लेशन माइट स्टे क्लोज टू 7% लेवल, बट सेकेंड हाफ FY23 में वी आर एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन लेवल्स टू कम डाउन. फर्दर आप देखेंगे मॉनसून्स काफी डिसेंट रहे हैं, और इसकी वजह से अगर क्रॉप की जो आउटपुट अच्छी रहती है तो आपके जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी कूल ऑफ होंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड रीजन आप देखेंगे कमोडिटी प्राइसेस में बहुत गिरावट आई है लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो इसका भी इम्पैक्ट आपको कमिंग क्वार्टर्स में कॉर्पोरेट अर्निंग्स और इन्फ्लेशन दोनों पे आपको दिखेगा. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ फ्रॉम आरबीआई इज दैट जो अभी रेपो रेट रेज वी आर लुकिंग एट अराउंड 35 to 60 basis point, which would mean it would be around 5.75 to 6%, and this would be a base case inflation scenario. इसके अलावा जो मैंने दूसरी चीज पॉइंट की थी which market is taking possibly positively is lower risk of earnings downgrade. Q1 earnings हमने देखी है कि broadly they have held up well and estimates के अकॉर्डिंग ही आई है. कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन आई है, तो आप काफी सारी कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स, कंजम्पशन डिपेंडेंट स्टॉक्स देखेंगे जहां पर वी कैन एक्सपेक्ट एंड सी ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूविंग गोइंग फॉरवर्ड. Now there are a couple of things that we have to take care or keep a note on with markets. जो मार्केट में रैली आई है तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है. एक है ग्लोबल स्लोडाउन, और देयर आर टॉक्स अबाउट पॉसिबल रिसेशन इन सर्टेन डेवलप्ड इकोनॉमीज, तो एक ये चीज हमें ध्यान रखनी है. और दूसरा, एनर्जी प्राइसेस काफी हाई हैं. इवन तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमने थोड़ी गिरावट देखी है लास्ट फ्यू डेज में, बट गैस प्राइसेस सिग्निफिकेंटली हाई हैं. अभी यूरोप में विंटर आने वाला है, तो वहां पर इन केस इफ गैस प्राइसेस कंटिन्यू टू स्टे हाई तो वो एक थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकता है वहां पे. So overall, I think broadly markets में, as I pointed out, there are three factors, which is inflation, possibly moderate rate hikes by the central banks, and lower risk of earnings downgrade, which possibly the market is factoring in right now. In terms of valuations, आप देखेंगे after this current recent rally, the valuations of Indian market looks quite full. बैंक में स्पेसिफिकली हम पॉजिटिव हैं. मोस्ट बैंकिंग और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल स्टॉक्स we still believe are trading at reasonable valuations. अगर हम निफ्टी 50 की अर्निंग्स की ग्रोथ की बात करें तो we are looking at around 10% earnings growth for Nifty 50 index in FY23 and around 15% in FY24. हम 810 रुपीज का EPS देख रहे हैं 23 में निफ्टी 50 कंपनीज का, और 928 रुपीज इन FY24.
ये EPS पे Nifty 50 index currently would be trading slightly about 22 times based on FY23 numbers and a bit about 19 times based on FY24 EPS estimates. अब ये जो EPS की हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में, ये कहाँ से आएगी? इसमें हमें लग रहा है कि ऑटोज और बैंक्स ये आपको बल्क ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट FY23 में देंगे। जो निफ्टी की इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट ग्रोथ आएगी, आपका बल्क इनमें से ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में से आएगा। और ऑटो में स्पेसिफिकली आई जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट, वी आर एक्सपेक्टिंग इसमें से टाटा मोटर्स का कंट्रीब्यूशन काफी हाई होगा। While we are expecting net profits for all the sectors to grow strongly in FY23, but there are a couple of exceptions we have. One is the metal and mining sector and the other is oil, gas and consumable fuel segments. Now, ये दो sectors ऐसे हैं जिनमें हमने government की तरफ से थोड़ी regulatory announcements देखे हैं in terms of export duty tax बोल लीजिए, excise duty tax बोल लीजिए, और हमने डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज में हमने मार्केटिंग लॉसेस देखे हैं क्वार्टर में। तो इनके वजह से ये दो सेक्टर है जहां पर वी एक्सपेक्ट दे मे नॉट पार्टिसिपेट टुवर्ड्स नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन FY23 विद इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। We'll now move on to the sectoral space. मैं ऑटोज में बात करूं तो ऑटो का आप अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा सबड्यूड क्वार्टर था ऑटोज के लिए। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी थी, बट एज आई टोल्ड यू कि लास्ट ईयर कोविड इंपैक्टेड क्वार्टर था। तो अगर हम सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, हम फोर्थ क्वार्टर से फर्स्ट क्वार्टर में देखते हैं तो नंबर्स थोड़े वीक थे। बट अगर जहां पर मैं ये भी पॉइंट करूंगा कि ऑटोज के लिए जनरली Q4 काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, और हम जनरली 1Q में थोड़ा वॉल्यूम्स को डिक्लाइन देखते हैं। वन ऑफ द की फैक्टर्स जो ऑटोज को इम्पैक्ट किया है ये क्वार्टर में वाज द स्टीप इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। जैसे हमने एल्यूमिनियम स्टील के प्राइसेस, वी नो हाउ दे हैड इंक्रीज्ड सम टाइम बैक, तो उसका काफी कुछ इम्पैक्ट ये क्वार्टर में रहा है। कंपनीज ने प्राइस हाइक्स लिए है, बट दे वर नॉट सफिशिएंट टू पास ऑन द कंप्लीट इम्पैक्ट ऑफ द काइंड ऑफ कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस दैट दे हैव सीन। और उसी के वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी बहुत प्रेशर में रही है Q1 की ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए। नाउ गोइंग अहेड, दो चीजें हैं। वॉल्यूम्स में देखेंगे तो वॉल्यूम्स में हम पॉजिटिव हैं, स्पेशली सीवीज में हमने देखी है कि स्टडी वॉल्यूम परफॉर्मेंस आ रही है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विल कंटिन्यू गोइंग अहेड। पैसेंजर व्हीकल्स में वी आर सीइंग गुड इम्प्रूवमेंट एक्सक्यूज मी। में देखेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे और कमोडिटी प्राइस डिक्लाइन का इम्पैक्ट आपको मार्जिन्स के ऊपर आगे दिखेगा। हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड ओईएम से इसमें पॉजिटिव है स्टॉक्स पे। सॉरी, सीमेंट कंपनीज का आप देखेंगे तो क्वार्टर काफी चैलेंजिंग रहा था, कमोडिटी प्राइसेस काफी हाई थे, तो उसके वजह से कंपनीज के मार्जिन्स और प्रॉफिट्स काफी इम्पैक्टेड रहे हैं। 2Q में भी हम सिमिलर पैटर्न देखेंगे, क्योंकि वीक क्वार्टर होता है वॉल्यूम के लिए, तो प्राइस इंक्रीजेस लेना इजी नहीं है सीमेंट कंपनीज से 2Q में। बट 3Q ऑनवर्ड्स वी आर एक्सपेक्टिंग सीमेंट कंपनीज के परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होंगे, कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़े कम हुए और उसका इम्पैक्ट आपको सेकेंड हाफ ऑफ FY23 में हम देखेंगे। करंटली हमारी डालमिया भारत और नुवोको पे एड रेटिंग है और श्री सीमेंट और रैमको सीमेंट पे हमारी सेल रेटिंग है। आई नाउ हैंड ओवर द कॉल टू Thank you, Arun, for the insightful presentation till now. मैं बात करूंगा कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी सेक्टर का। इस क्वार्टर में उन्होंने बहुत ही अच्छा नंबर दिया है इस सेक्टर ने। की हाईलाइट था स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस स्टेपल्स एंड डिस्क्रिशनरी पैक। उसमें एक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट है जो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, बट होम केयर और फूड सेगमेंट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है सभी कंपनियों के लिए। कंपनीज आगे जाके रूरल सेक्टर के लिए थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है। बड़ी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, ब्रिटानिया हुआ, नेस्ले, ITC, they continue to address short-term challenges by growing its consumer franchise and also protecting its business model. डिस्क्रिशनरी कंपनीज ने भी काफी अच्छी वॉल्यूम दी है, विद एशियन पेंट्स एंड ITC रिपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और टाइटन ने तो बहुत ही बढ़िया नंबर दिए है विद 170% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। Discretionary consumption was supported by low base of last year due to COVID second wave and opening of the economy and stable COVID situation currently.
कंज्यूमर कंपनीज आगे लगातार प्राइस बढ़ाती जा रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन. Most consumer companies in this quarter face gross margin and EBITDA margin pressure primarily due to raw material inflation. कंज्यूमर सेक्टर के लिए एक मेजर पॉजिटिव अभी ये आ रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी सॉफ्टन हुए हैं लास्ट 3 महीने में, और हमें ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY23 में ये काफी मेजर पॉजिटिव रहेगा कंज्यूमर कंपनीज के लिए. और वॉल्यूम ग्रोथ भी सिग्निफिकेंट हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टेबल सिचुएशन, गुड ग्रोथ इन द इकोनॉमी एंड नॉर्मल मॉनसून. कंज्यूमर कंपनीज ने इस क्वार्टर से अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी काफी बढ़ाया है गिवन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन. मोटा मोटी हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री क्वार्टर था कंज्यूमर कंपनीज के लिए, और आगे हमें खाली इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है. कंज्यूमर कंपनीज में हमें अच्छा लगता है सफायर फूड्स, जिसने बहुत ही अच्छा नंबर्स दिया. हमारा टारगेट प्राइस है, हमारा बाय रेटिंग है और टारगेट प्राइस है 1550 का. बहुत ही बढ़िया नंबर रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में, बहुत KFC के लिए और पिज्जा हट के लिए. इनफैक्ट हमें पूरा QSR स्पेस बहुत ही अच्छा लगता है एंड एक्सपेक्ट दिस स्पेस टू डू वेल इन नियर टर्म विद इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन. जोमेटो और स्विगी का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है QSR स्पेस के लिए. तो हमें सफायर फूड्स पे हम लोग पॉजिटिव है विद टारगेट प्राइस ऑफ 1550. ITC भी हमें बहुत पसंद है. ITC का भी नंबर ऑल राउंड बहुत ही अच्छा आया था. सिगरेट सेगमेंट उनका काफी स्टेबल है. FMCG इज डूइंग वेल, होटल इज पिकिंग, पेपर बोर्ड इज डूइंग वेल, और डिस्काउंट पे चल रहा है बड़े FMCG प्लेस के वैल्यूएशन से. इसलिए हमें ITC भी पसंद है और हमारा बाय रेटिंग है विद टारगेट प्राइस ऑफ 337. कंज्यूमर स्पेस में हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अच्छा लगता है, जुबिलेंट फूडवर्क्स भी अच्छा लगता है और वरुण बेवरेजेस भी अच्छा लगता है, जिन्होंने काफी रोबस्ट नंबर्स इस क्वार्टर में दिए थे. वी आर नेगेटिव ऑन मैरिको which reported weak numbers. We are also negative on Berger Paints which also reported weak numbers compared to Asian Paints. We have a reduced rating on both the stocks. On Berger, we have a target price of 600, and on Marico, we have a target price of 510. So this quarter was good for consumer sector, and we expect robust growth in future quarters. That's it from my side. Over to Hemali for a take on banks and NBFCs. Banks and NBFCs, if we look at them, they performed particularly well in the quarter. What we have seen is we've seen a strong 33% growth in banks, which is aided by lower provisions. NIMs have held up well, loan growth was also strong, and the impairment ratio across non-performing assets have declined. Similarly, in NBFCs, we have seen one of the strongest quarter despite being seasonally weak historically. We've seen the underlying demand being strong, we've seen stress ratios fall, and we've also seen NIMs to remain strong. The specific reasons for a strong loan growth is one is inflation-driven growth. At the same time, underlying demand is also picking up because of improved capacity addition among players. NIMs, despite rising interest rates, NIMs have held up well. We believe that the transmission of costs or NIMs in this cycle will be faster than previous cycle because most of the book is linked to the external benchmark. We believe that the business conditions look particularly comfortable for all the lenders in the space. In the financial year 23, we believe the overall sector will give 27% growth. This is amongst the banking companies in Nifty 50 index. Our investment thesis is twofold for banks. One, we like tier 2 or mid-size banks such as Federal, KVB, and DCB. The reason being the credit cost or impairment driven by COVID is totally behind us, and we don't see risks of high credit costs going ahead. At the same time, as we've mentioned, NIMs are holding up well, and the loan growth is also showing signs of improvement. However, if you want to be on the safer side and you're worried about the macro or its possible secondary effect, which is currently hard to forecast, then we would like investors
to be invested in Tier 1 banks, that is ICICI, Axis, and SBI. This is for risk-averse investors. On the NBFC side, we like Cholamandalam, and we believe that MMFS and LIC Housing Finance are better placed based on their valuation. That is all from our side. I'll hand it over to my colleague to take it further. थैंक यू हिमाली। मैं अभी मेटल्स एंड माइनिंग पर डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप ओवरऑल रिजल्ट्स देखेंगे मेटल्स एंड माइनिंग का, तो नंबर्स वीक आए हैं, प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ लोअर कमोडिटी प्राइसेस। और अगर आप देखेंगे मेटल प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं FY22 से फ्रॉम हाई बेस। एंड इसमें एक बड़ा इधर रिसेंट जो रीजन रहा है, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी जो इम्पोज किया है गवर्नमेंट ने ऑन स्टील, उसने भी सेंटिमेंट्स वीक किया है। सो मेटल्स हमें ऐसा लगता है ऐसा सिलेक्ट सेक्टर है जहां पर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लोडाउन इम्पैक्ट आ सकता है अर्निंग्स पर। और जो अगर जहां तक रिजल्ट्स की बात करें तो मेटल एंड माइनिंग में जो आउट परफॉर्म किए जिन्होंने, उसमें कोल इंडिया ने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है। तो इट हैज रिपोर्टेड हायर देन एक्सपेक्टेड। जो ऑप्शन ऑफ कोल हुआ है उसकी वजह से, कोल प्राइसेस का हुआ है, इसकी वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट आया है। JSW एंड टाटा स्टील्स की बात करेंगे तो हायर रियलाइजेशन बोथ एंड इंडिया एंड यूरोप हैज impacted their earnings. So in that way, these two companies have done well. In terms of outlook, if we see, so we see around a 41% decline in FY23 in metals and mining stocks under Nifty. So this is primarily on account of decline in global metal prices on a muted global demand and steep decline in domestic steel profitability. इसमें अगर हमारा जो प्रेफर्ड पिक है वो हिंडाल्को है, तो हिंडाल्को पे हमारा बाय रिकमेंडेशन है, टारगेट प्राइस 550 है। इसमें अगर हम देखते हैं तो जो Q1 का जो नंबर है, एबिटा वाज अहेड ऑफ आवर एस्टिमेट। दिस वाज ऑन स्ट्रॉन्गर एल्यूमिनियम मार्जिन। एंड अगर नोवेलिस की बात करेंगे तो वहां पर भी मैनेजमेंट ने एबिटा पर टन का जो गाइडेंस इंक्रीज किया है बाय 5%, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि नोवेलिस की जो अच्छी अर्निंग्स रहेगी, दैट विल हेल्प इन दैट विल नेगेट सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम द इंडियन मार्केट। तो हिंडाल्को पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, बाय रिकमेंडेशन है एंड हमारा टारगेट प्राइस 550 है। नेक्स्ट प्लीज। तो कैपिटल गुड्स की अगर बात करें, कैपिटल गुड्स सेक्टर in this quarter has given good results altogether. The execution was strong. Of course, the base was low. एक लो बेस पे उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्डर इनफ्लोज भी अच्छी रही हैं कैपिटल गुड्स कंपनीज की, जो हमारे कवरेज में है। और अगर ओवरऑल अगर जो लार्ज कैपिटल गुड्स की बात करेंगे तो वहां पर डोमेस्टिक रेवेन्यू में करीबन मोर देन 30% का ग्रोथ आया है इन Q1, एंड ऑर्डर इनफ्लोज भी करीबन 57% से ग्रो हुए हैं। तो ये शो करता है कि जो कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं वो कोविड के इम्पैक्ट से बाहर आ चुके हैं और विल सी गुड परफॉर्मेंस इन फ्यूचर एज वेल, बोथ ऑन रेवेन्यू एज वेल एज ऑन ऑर्डर फ्रंट। इनफैक्ट कंपनीज लाइक L&T जिसने डिफेंस एंड हाइड्रोकार्बन से काफी अच्छा ऑर्डर इनटेक किया है इन दिस क्वार्टर। अदर जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है, दे हैव गॉट वेरी गुड ऑर्डर्स इन क्लीन एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो लाइक प्राज ने बायोफ्यूल में काफी अच्छा ऑर्डर इनटेक किया है। ABB इज डूइंग वेल इन द ऑटोमेशन साइड। तो इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स जो अच्छे आउट परफॉर्मर रहे हैं इसमें ABB ने अच्छा किया है, BEL ने भी अच्छा किया है, प्राज ने काफी अच्छा किया है इन दिस क्वार्टर। अंडर परफॉर्मर रहा है जो वेल रहा है बिकॉज ऑफ EBITDA लॉस आया है कंपनी का, एंड ऑर्डर इनफ्लोज भी म्यूटेड रहा है फॉर BHEL। सो अगर इसमें हमारी टॉपिक्स की बात करेंगे तो वी कंटिन्यू टू लाइक L&T एंड प्राज। तो L&T में दो द रिजल्ट्स वाज इन लाइन, बट ओवरऑल इफ यू सी द पाइपलाइन, जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मोर देन 7.6 लाख करोड़ का प्रोस्पेक्ट पाइपलाइन है। तो दैट विल ड्राइव देयर ऑर्डर इनफ्लोज इन फ्यूचर। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस भी मेंटेन रखी है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग 12 to 15% ग्रोथ इन रेवेन्यू, एंड EBITDA मार्जिन करीबन 9.5% पे उन्होंने मेंटेन रखा है।
एंड स्टॉक भी एक काफी रीजनेबली वैल्यूड, इतना एक्सपेंसिव नहीं है vis-a-vis अदर कैपिटल गुड्स कंपनी. So we like L&T, we have a buy and target price of 2000 rupees. प्राज जो कि काफी अच्छी स्टोरी है बायोफ्यूल साइड में, एंड वी सी दिस कंपनी इज गोइंग टू बी अ मेजर बेनिफिशियरी फ्रॉम द ग्रीन एंड द क्लीन एनर्जी साइड, बिकॉज अभी इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे 1000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर इनफ्लोज हुआ है, एंड ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है विच मोर देन 4000 करोड़, विच गिव्स वेरी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर. इनफैक्ट उसके आगे की पाइपलाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है या सीबीजी है, एंड ऑन ऑल दैट फ्रंट order inflows even in domestic international market the order inflows will be quite strong because Brazil से भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है. तो स्टॉक अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स तो मोर देन 30% अर्निंग CAGR नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड मोर देन 20% ROE, एंड हमारा एक बाय रिकमेंडेशन है प्राज पर और उसकी टारगेट प्राइस 445 रुपीज है. कमिंग टू रियल स्टेट एंड रिटेल सेक्टर, तो रियल स्टेट ने काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है इन दिस क्वार्टर, सेल्स मोमेंटम काफी अच्छा रहा है. अगर हम इसमें कंपनीज की बात करेंगे, जो भी बड़ी कंपनी जब ब्रिगेड है, गोदरेज, लोधा, शोभा, सभी ने काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ की है. तो दे हैव रिपोर्ट मोर देन 140% वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ ऑन अ YOY बेसिस. रेसिडेंशियल साइड में जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्स. अभी कंपनीज प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आगे भी विजिबिलिटी काफी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ फॉर द रियल एस्टेट कंपनीज. तो इसमें अगर जो कंपनीज कुछ जो अच्छी की हैं इन्होंने रिजल्ट्स लाइक मैक्रोटेक, ब्रिगेड. रिटेल साइड में टाइटन ने काफी अच्छा रिजल्ट किया है. इसने मतलब इनफैक्ट दे हैव आउट परफॉर्म्ड ऑन ऑल फ्रंट. So even jewelry side they have grown at 23% CAGR in last 3 years. So even if we look at as a pre-COVID as a base, on that base they have grown at more than 20% in last 3 years. So that shows very strong momentum on the jewelry business side, because अभी जो economy reopen हुई है and things have come back to normal, Titan will be a major beneficiary out of it. इसमें हमारा ad rating है and we have a target price of 2600. रियल एस्टेट में हमारा जो प्रेफर्ड पिक है उसमें लोधा है, बिकॉज वहाँ सेल्स काफी अच्छी है एंड पाइपलाइन भी स्ट्रांग है और कंपनी भी डेट रिडक्शन कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो. इसमें हमारा बाय व्यू है एंड हमारा जो रेटिंग टारगेट प्राइस है 1320 है. नेक्स्ट कंपनी इज प्रेस्टीज दैट वी लाइक. प्रेस्टीज हैज आल्सो डन वेरी गुड in terms of sales. They have reported more than 3000 crore of sales, which is more than 4 times of last year sales number. एंड इस क्वार्टर में अकेले इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट किया, प्लस मुंबई में भी वो काफी अच्छा कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी हमें हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है एंड वी मेंटेन बाय ऑन प्रेस्टीज एंड वी हैव अ टारगेट प्राइस ऑफ 560 रुपीज. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ओवर टू माय कलीग. थैंक यू पंकज. अब चलते हैं फार्मा सेक्टर की ओर, जहाँ पे अगर हम देखें तो क्वार्टर 1 का परफॉर्मेंस इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन था. जैसे कि हमने पिछले कुछ सेशंस में भी बताया है कि रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक कॉस्ट का प्रेशर बना है अभी भी, बट जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं वो कुछ हद तक उनको हेल्प कर रहे हैं टू मार्जिन का प्रेशर रिलीव करने के. डोमेस्टिक बिजनेस पे अगर हम लोग देखें तो H1FY22 में काफी हाई बेस था बिकॉज कोविड का सेकेंड वेव चालू था. तो कंपेरेटिवली हम लोग देखेंगे कि FY23 में फर्स्ट हाफ का बेस आपको थोड़ा म्यूटेड और परफॉर्मेंस भी थोड़ा म्यूटेड दिखेगा. बट FY24 onwards, we are expecting a strong growth in the domestic formulation business. US में देखें तो US में भी जैसे हमने बताया था कि newer approvals थोड़े slow हो गए थे, तो वो because of that the sales in the US generics were also muted. But we are expecting कि FY24 onwards the recovery will be very sharp because there are a lot of new launches that lot of larger companies have already planned, and इनके approvals जैसे ही इस क्वार्टर में आते हैं तो उनके launches H2 में शुरू होंगे, जहां से हम performance improve करना देखेंगे. So we expecting कि pharmaceutical companies will show 22% growth in their profits in FY24. इस सेक्टर में सिप्ला और सन हमारे टॉपिक्स है, जहाँ पे सिप्ला पे हमारी बाय रेटिंग है और टारगेट प्राइस 1215 है, एंड सन फार्मा is our ad rating जहाँ पे target price is 1040, and because उनका specialty portfolio काफी अच्छा कर रहा है, quarter 1 के numbers भी काफी strong थे, तो ये आगे चल के भी continue होगा.
In healthcare space, we feel Dr. Lal's Path Lab is the sell rating. That's basically क्योंकि वहाँ पे valuation अभी भी काफी expensive है, तो we say कि avoid the diagnostic space and specifically larger names क्योंकि अभी भी pricing pressure वहाँ पे बनी है. That's all from my end. I'll now hand over to Sumit for his take on IT. Thank you. जैसे कि IT सेक्टर सबका डार्लिंग सेक्टर था काफी समय से, but suddenly stocks are not performing right now because of certain reasons. Let's understand what has gone wrong here. The margin declined further for tier 1 IT companies, but surprisingly resilient for mid tier IT companies. अब IT कंपनीज में देखेंगे तो टॉप लाइन सब कंपनी ने बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. तो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में इन्फोसिस हैज आउटबीटन मोस्ट ऑफ द अदर कंपनीज, और वो सरप्राइजिंगली काफी हाई था स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से. हाउएवर देयर आर फ्यू साइंस ऑफ स्लो डाउन विजिबल. डील विंस देखें अगर अपन पूरे तो टीसीवी वाज फ्लैट और डिक्लाइंड ईयर ऑन ईयर फॉर टियर 1 आईटी कंपनीज. डील विंस जो अपन ने जो हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखी है वो कहाँ से आ रही है अगर इतना सब प्रेशर है और स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? बिकॉज ये पास्ट में जो डील्स विन करी थी उसी से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन कंपनीज को. कंपनी का मानना है कि ये शॉर्ट टर्म ब्लिप था. क्यों आया? क्योंकि इसमें मार्जिन प्रेशर आ गया इन टर्म्स ऑफ हायर मैन पावर कॉस्ट, राइज इन ट्रेवल कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. तो इसके कारण मार्जिन प्रेशर आ गया. बट मैनेजमेंट को लगता है कि डिमांड एनवायरनमेंट काफी रोबस्ट है डिस्पाइट मैक्रो कंसर्न्स, और ये भी लगता है कि मार्जिन्स है बॉटम्ड आउट एंड विल इम्प्रूव. तो हमें ये लग रहा है कि अगर ये सब पास ऑन कर दिया गया कंपनी ने, कॉस्ट जो प्रेशर देख रहा है प्लस करेंसी का बेनिफिट अगर कंपनी को मिलता है, तो मार्जिन्स यहाँ पे बॉटम आउट हो सकते हैं और यहाँ से इम्प्रूव करेंगे, विच इज नॉट प्राइस्ड इन येट. Growth can slow down over next few quarters, but baked in our estimates. We prefer Infosys and HCL Tech among tier 1 IT companies and emphasis among mid tier 2 companies. We have reduced rating on Mindtree. तो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को क्रिएट कर रहे हैं तो Infosys और HCL Tech को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं. Infosys ने Q1 का रिजल्ट बहुत अच्छा दिया था इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, और स्ट्रीट को काफी सरप्राइज किया. मार्जिन प्रेशर के कारण स्टॉक हैज फॉलन डाउन, बट आई थिंक ये काफी हद तक प्राइस्ड इन है. नेक्स्ट प्लीज. मूविंग टू ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिलायंस रिपोर्टेड रिकॉर्ड अर्निंग्स. हाउएवर 10% मिस ऑन कंसोलिडेटेड एबिटा ड्रिवन बाय O2C बिजनेस. ये क्यों हुआ? क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन पे प्रेशर आ गया था, उसके कारण जो एक्सपेक्टेशन थी ऑयल टू गैस, ऑयल टू केमिकल बिजनेस से, वहां पे एबिटा पे अंडर परफॉर्म किया है. However, overall performance was robust. All other segments have done very good for the company. In fact, sequential EBITDA improvement in each segment has been missed. It has been seen, but O2C has seen a miss. Geo and E&P, that is upstream segment, has done extremely good. So customer addition has been robust. So overall, Reliance, we are very bullish, given that most of the concerns are behind us and a lot of the concerns is already in the price. आपको मालूम होगा 5G लॉन्च होने वाला है, तो Reliance will be one of the biggest beneficiaries. ONGC का so far EBIT below estimate आया था. Weak operating performance और OVL दोनों के कारण EBITDA खराब आया था इस ONGC का. OVL का नोन रीजंस है, सबको मालूम है, मोस्टली बिकॉज ऑफ रशिया फैक्टर. विंडफॉल टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया इन ऑयल, दैट बिकम्स अ बिग कंसर्न फॉर द सेक्टर. द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट कैपिंग डोमेस्टिक APM प्राइसेस इज हाई. तो अगेन एक और कंसर्न खड़ा है अपने सामने. So ONGC पे हम we are not very bullish. We are in fact selling to move out of this stock and look for a better opportunity. So far GAIL is concerned, headwinds in each segment has been seen. ट्रांसमिशन में प्रेशर था, पेट्रोकेमिकल में प्रेशर था, LPG में अंडर परफॉर्म किया है. सो क्यों? क्योंकि गैस कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी.
cost pressure will intensify going forward because of the commodity prices. Again, gas prices internationally started moving up. With marketing loss, second largest EBITDA loss for BPCL. गवर्नमेंट इनको प्राइस रिटेल फ्यूल प्राइस बढ़ाने को नहीं दे रही है, क्रूड प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पे है, इसके कारण इनका रिफाइनिंग तो अच्छा कर रहा है बट मार्केटिंग डिवीजन इज डूइंग वेरी बैड, तो वो सारा प्रॉफिट खा जाता है रिफाइनिंग बिजनेस का। इसके कारण कंपनी ने सेकंड लार्जेस्ट इबिटा लॉस पोस्ट किया है Q1 FY23 में। सिमिलरली HPCL ने वर्स्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट करी है डिस्पाइट बेस्ट GRMs। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण ये कंपनीज को इम्पैक्ट हो रहा है, HPCL, BPCL, ONGC को। So why not to focus on large company like Reliance Industries, which has been doing very good in all its segments. So we like Reliance, Mahanagar Gas and IGL. What we don't like is BPCL, HPCL and GAIL. OMCs preferably avoid कर सकते हैं। गेल में जैसे मैंने बताया अभी सारे सेगमेंट्स में प्रेशर दिखा है और गैस प्राइसेस ऊपर ही है, इंटरनेशनल गैस प्राइस, so that can remain a concern for the company. That's all from our side. Hand over to Rini. Thank you, sir. Dear participants, thanks for being patient. We will now open the floor for Q&A. Before that, let me remind you to follow us on our social channels, Telegram, Instagram, and Twitter if you haven't already. And feel free to drop any feedback you have for us. Okay, now starting with the first question. First question is from Autospace. Arun sir, Ajay Verma is asking for views on Tata Motors. से टाटा मोटर्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, हालांकि स्टॉक थोड़ा चल गया है। उनके आप डोमेस्टिक बिजनेसेस देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल्स बोथ द बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। JLR में थोड़े से कंसर्न्स हैं। JLR में एक तो चिप सप्लाई की इशू है जिसकी वजह से वॉल्यूम्स ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है वहां पर, बट अनदर थिंग दैट वी आल्सो हैव टू सॉर्ट ऑफ फैक्टर नाउ कि अगर हम ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे हैं तो एक वो चीज है जो हमें ध्यान रखती है। बट एनीवेज उनकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है इस मोमेंट में JLR में, बट दैट माइट टेक सम टाइम टू रिकवर दैट पर्टिकुलर बिजनेस बिकॉज जैसे जैसे चिप की सप्लाई की सिचुएशन इंप्रूव होगी, कंपनी ने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर JLR में काफी नीचे लेके आए हैं, तो जब वॉल्यूम ग्रोथ आएगी वहां पर आप मार्जिन इंप्रूवमेंट भी काफी देखेंगे JLR में। सो ओवरऑल टाटा मोटर्स पे व्यू पॉजिटिव है, करेक्शंस पे आप टाटा मोटर्स ऐड कर सकते हैं। Thank you, Arun sir. Next, two questions are for Amit sir. Amit sir, Ajit is asking for your views on Asian Paints. Asian Paints has reached 3,500. So what's your view from here? Thank you, Rini. Asian Paints पे हमारा reduce rating है with a target price of 2950. हाँ, स्टॉक काफी चल गया है, 3,500 पहुंच गया है क्योंकि उसके क्वार्टरली नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड इंडस्ट्री आउट परफॉर्मेंस काफी टाइम के बाद देखने को मिल रहा है स्टॉक में। B2B बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है, उसका डेकोरेटिव बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अपना डेकोरेटिव बिजनेस में और एडजेसेंसीज में जिसको हम लोग होम डेकोर और वाटर प्रूफिंग बोलते हैं, वो उसमें भी अपना बिजनेस काफी फैला रही है। रॉ मटेरियल सिचुएशन भी काफी फेवरेबल हो रहा है, बट नेगेटिव साइड में देयर इज इंक्रीजिंग कंपटीशन विद एंट्री ऑफ ग्रासिम, JK Cement and JSW Paints into the paint business. We believe Asian Paints could go through a year or two of muted earnings once Grasim enters the business, which is inevitable for the industry. Valuations are also very stretched it's almost trading at 55x FY24 earnings. तो मोटा मोटी हम लोग को लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी अनफेवरेबल है और ये लेवल पे एग्जिट कर देना चाहिए स्टॉक से और हमारा रेडियस रेटिंग है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2950. Amit sir, next question is again for you.
Mandar is asking, are QSR stocks such as Westlife, Jubilant and Devyani International overbought at current levels, especially looking at their EPS? Mandar, this is a very wrong way to look at the QSR space. अगर आप QSR space को देखो तो कोविड की वजह से काफी उनकी हालत खराब हो गई थी. डाइन इन भी बंद था, डिलीवरीज भी बंद थे, बट सिंस जनवरी बिजनेस हैज पिक्ड अप फॉर देम. और अभी आप देखोगे तो लास्ट 2 साल में काफी सारे QSR कंपनीज ने लॉसेस किए, बट उनका आउटलुक काफी फेवरेबल है. अभी आप टेलविंड्स देखो सेक्टर के लिए तो ऑर्डरिंग हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, कंपटीशन भी काफी रैशनल है, कंपनीज का एग्जीक्यूशन भी काफी शार्प है. एवरी कंपनी हैज अ वेरी नीच स्ट्रैटेजी ऑफ बिजनेस. कंपनीज आर कंटिन्यूसली एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, कैश फ्लो जनरेशन इज स्ट्रॉन्ग, ओवरऑल सेंटिमेंट इज वेरी पॉजिटिव फॉर द बिजनेस. और स्विगी और जोमेटो के वजह से उनका बिजनेस को एक और एडिशनल पुश मिला है. तो आप देखो तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है बिजनेस के लिए. और जब बिजनेस सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होता है और आप देखो कि अर्निंग CAGR भी उनका काफी स्ट्रांग रहेगा अगले 3-4 साल में, 30-35% का CAGR दिखाएगा. तो सेंटिमेंट विद बैक्ड बाय फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो ये सब स्टॉक्स प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे. और ऐसा नहीं कि हमारा हर QSR कंपनी पे एकदम पॉजिटिव व्यू है. देवयानी में रिसेंटली हमने रेटिंग रिड्यूस कर दिया है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 179. और बाकी सब QSR कंपनीज लाइक जुबिलेंट पे हमारा एड रेटिंग है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 615. रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया पे एड रेटिंग विद 126, सफायर बाय रेटिंग विद 1550 एंड वेस्टलाइफ डेवलपमेंट एड विद द टारगेट प्राइस ऑफ 640. तो हम लोग एकदम एग्रेसिव नहीं है, बट वी आर optimistic about the QSR space going forward. Thank you, Amit sir, for an insightful answer. Next question is from oil space. Sumit sir, one participant wants to know the target price for Oil India and should he sell or hold the stock? See, Oil India, if you look, the problem with the company that if crude goes up, this is the best time for them to make profits. But unfortunately, there are government capping in terms of government regulation imposing taxes, windfall gain tax on these companies. So, I mean, this is taking away the profits which they can make in the best of their times. So one should avoid such stock at this point in time, and that is why we are saying ONGC and Oil India should not look at because of the government policies. You can look if you want to invest in oil and gas space, then Reliance is the best best stock to play with this story. You can also play with IGL and MGL because these are the two quality stocks where the government has got a lot of focus in this space because they are serving to retail public in terms of CNG and PNG. In fact, the government thrust, मैं जो बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस है, which can be seen कि गवर्नमेंट ने अभी उनको गैस अलोकेशन बढ़ा दिया है, तो वॉल्यूम उनको ज्यादा मिल रहा है गवर्नमेंट से एट ए सब्सिडाइज रेट एज कंपेयर टू इंटरनेशनल रेट्स. तो इनका जहां पे ये स्ट्रगल कर रहे थे प्राइस बढ़ाने के लिए, अब इनका मार्जिन इतना ज्यादा हो गया कि बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर को बाय कटिंग द प्राइसेस. तो मतलब आप समझ रहे हैं इनको कितना विंडफॉल गेन हुआ है गवर्नमेंट की रिसेंट पॉलिसी से, जहां पे उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई बढ़ा दी है इनको डोमेस्टिक गैस की. इससे इनके मार्जिन्स बढ़े हैं, प्लस इन्होंने पार्शियल बेनिफिट पास ऑन किया कस्टमर को, उससे इनका वॉल्यूम बढ़ेगा. सो कंसीडरिंग दिस स्पेस वैल्यूएशंस आर चीप, तो IGL एंड MGL आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए. मैं काफी टाइम पहले भी बताया हुआ है कि वी आर वेरी बुलिश ऑन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. वी आर ऑल्सो बुलिश ऑन गुजरात गैस, बट उसका मॉडल थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू एन IGL एंड महानगर गैस. Thank you, Sumit sir. Next question is again for you. Ravindra is asking short-term target for ONGC. See, we are saying that because of the government regulation, see, first of all, you understand that crude prices have started coming down from its highs.
So what we have seen 140 that has gone. The crude is currently trading around $93, $94. So that means the best of the scene has already been captured in the valuation. Plus, government is taking away the money in terms of taxes from them. So broadly, one can say that this not a, and I just mentioned that the domestic gas prices can again be kept by government. So that is again negative for ONGC. So considering all these factors, we believe that the earnings growth potential looks very bleak for ONGC and Oil India. So far, the target price is concerned, we have a ONGC pay, we have a value, we believe the fair value at 105 rupees, and for Oil India, the fair value is 150 rupees. Thank you, Sumit sir. Next questions are from banking space. Hemali Tayyab wants to know the target on Bajaj Finserv, and Nitin Kochar wants to know your view on PSU banks. You on PSU bank have 5 banks on our coverage: SBI, Bank Baroda, and Bank Canada Bank. We like SBI, Canada, and. Excuse me. Hemali, you are not audible. Can you hear me now? No. The voice is very low. You can go to the next question. I'll come back after. We'll come back to Hemali after a few questions. Right. I'll take next question. Until then, next question is for Pankaj sir. Pankaj sir, in real estate, what is your view on India Bulls real estate? This is a question from Vijay Kumar. So just to tell you, like India Bulls real estate, we do not cover it on a fundamental view. But overall, if you see on the sector, we are positive on the residential side, particularly the companies which are focused on Bangalore market. And in fact, I have mentioned like we like Prestige in that space. Plus the other companies which are based in Bangalore like Shobha and Brigade, they're also doing very well. And even the outlook for next 1 year is quite positive because the inventory levels are low and most of the companies are going for new launches. In fact, for the Mumbai-based players, if you are looking at, then one can look at Lodha, because Lodha has done very well and they are also launching in a mid category. So a lot of projects are being launched. We are positive on that. So that is our top take. Pankaj sir, also if you can answer view on DMart for 6 months. So DMart for 6 months, it's very difficult to give a view, but over a long term period also we have a sell view, and there's only one reason is because of the valuation. Otherwise, if you see, the company is doing well. In fact, the Q1 results was also quite strong. The companies report 95% growth, and even the margins have improved because of the better mix. So if someone is looking from 6 months perspective, because of valuation, we do not see any upside. We have a sell rating and we have a target price of 3650. Thank you, Pankaj sir. Next question is from Venkateshwara Rao. He is asking which sector could be best performing in FY23. Shrikant sir, can you take this one? Yeah, I think for the Q1FY23, if I consider any one sector where the numbers are better, or I can say as per expectations, is like financial, because number of these companies or bank or NBFCs from this sector did well. There is still upside for a number of banks. For example, Axis is still quoting at 760, 770, whereas it has upside of nearly 950, 960. For State Bank also there is upside. If there is any correction in the market, then also there is like a lot of confidence or conviction in terms of buying and holding for next 12 months. Large cap as well as mid cap, all are like showing a lot of momentum, and the way there was like
रिडक्शन इन द प्रोविजंस और रिकवरीज, आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहेगा कि जो हमें लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मर था। और इसके साथ साथ हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करें और इन दोनों में से किसी एक को अगर एक 12 मंथ्स के व्यू से अगर मुझे खरीदना है तो मैं वेरी फर्स्ट फाइनेंशियल्स के ऊपर फोकस करूंगा। फार्मा में नो डाउट काफी सारी कंपनीज में अभी अपसाइड ओपन हो चुकी है एंड दे हैव अगेन स्टार्टेड डूइंग वेल। सो यहाँ से अगर थोड़ा सा वॉलेटाइल सेक्टर है क्योंकि उसमें काफी सारे अनाउंसमेंट आते रहते हैं, बट अगर उस वॉलेटिलिटी को अगर डाइजेस्ट करने की अगर कैपेसिटी है तो आप बिल्कुल उनमें से जो सेफेस्ट बेट्स है जैसे कि सन फार्मा है या सिप्ला है, आप वहां पे फोकस कीजिए। अदरवाइज हमें लगता है कि आपको फाइनेंशियल्स के ऊपर फोकस करना है, और साथ ही साथ जो हमने कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, हमें लगता है उन स्टॉक्स के भी ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। Shrikant sir, I'll combine two questions from Hemant Shah and Anaya. They want to know top 5 stocks for long-term investment. टॉप 5 स्टॉक्स बहुत इजी है क्योंकि मार्केट भी ऊपर आ गया है, और साथ ही साथ हमें लगता है कि हमारे बास्केट में या तो हमारा जो यूनिवर्स है, जो जिन स्टॉक्स को हम कवर करते हैं, उनमें हमने कुछ गिने चुने स्टॉक्स को ऑलवेज बाय लिस्ट पे रखा है, और हमें लगता है कि हमें उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर बार बार फोकस करना है। मैंने देखा कि अभी चैट रूम में हमने कई बार कई सारे क्वेरीज देखे, और काफी सारे लोगों का कहना है कि कवरेज लिस्ट बढ़ानी चाहिए या तो काफी सारे स्टॉक्स को और कवर करना चाहिए। मुझे लगता है इस मार्केट्स में वैसे देखा जाए तो बहुत सारे आइडियाज मिलेंगी, लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है that time it becomes very very difficult to hold all other ideas which are right now looking really good. So जो मिड कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज है, उनमें एक अलग लेवल का कन्विक्शन कॉन्फिडेंस होना काफी जरूरी है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स अगर है तो हमें लगता है कि हमारा जो फोकस है वो कंप्लीटली लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में करेक्शन कभी भी आ सकता है। जैसे मार्केट अभी बढ़ गया वैसे आने वाले दिनों में मार्केट गिर भी सकता है। अगर यहाँ से अगर पकड़ लेते हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स है, अगर वो 110 के करीब चला जाता है, या तो क्वांटिटेटिव ईजिंग के टाइम पे अगर कुछ अपनी करेंसी में अगर और डेप्रिसिएशन देखने मिलता है, तो हमें लगता है उस वक्त जो एक सेल ऑफ आएगा या वीकनेस आएगी, उस वक्त हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मुझे कुछ स्टॉक्स को तो खरीदना ही है विद अ लॉन्ग टर्म। और इसी वजह से हमें लगता है कि यस अगर मैं टॉप 5 कंपनीज की अगर बात करूंगा तो वेरी ब्रीफली हमें लगता है कि अगर किसी एक स्टॉक किसी 5 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है तो मुझे थोड़ा डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। और अगर मुझे डाइवर्सिफाई होना है तो मैं करंट लेवल से जहाँ पे डिसेंट अपसाइड दिख रही है उसमें सबसे पहले अगर मुझे अगर कोई अगर स्टॉक खरीदना है तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चलें, जहाँ पे मल्टीपल ट्रिगर्स है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जैसे इस कंपनी का डिजिटाइजेशन बिजनेस बढ़ते जा रहा है, हमें लगता है कि इस कंपनी के ऊपर ऑन एवरी डीप लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। साथ ही साथ हमें लगता है कि इसके अलावा अगर किसी एक बैंक को अगर मैं खरीदना चाहूंगा करंट लेवल से, तो हमें लगता है एक्सिस बैंक में काफी अच्छी अपसाइड है। नो डाउट कि स्टेट बैंक भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन एक्सिस बैंक को लॉन्ग करके चले, यहाँ पे हमें लगता है कि डाउन साइड इज हाईली प्रोटेक्टेड। फार्मास्यूटिकल्स में से हमने ऑलरेडी सन फार्मा के ऊपर बात की है, लेकिन ये भी हमारा एक टॉप पिक है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आईटी में अगर जाना है तो आईटी में वैसे अपसाइड काफी कम है काफी सारे स्टॉक्स में, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है या तो डायरेक्टली लिंक्ड है विद दी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द यूएस मार्केट्स। तो जो इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल आएंगे, जो बॉन्ड यील्ड में शायद हमें एक रैली देखने मिलेगी, अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग के टाइम पे अगर कुछ अगर मोमेंटम अगर आता है, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर थोड़ा सितंबर तक कॉशियस रहेगा। लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि इन सेक्टर में से भी ये पर्टिकुलर सेक्टर में से भी हमें इन्फोसिस को खरीद के चलना चाहिए। और अगर मुझे ऑटो सेक्टर पे फोकस करना है, क्योंकि कंजम्पशन रिलेटेड अगर 2 सेक्टर अगर मैं लेता हूँ, एक एफएमसीजी है और एक ये अपना अगर ऑटो अगर है, तो अगर इनमें अगर फोकस करना है तो हमें लगता है कि और भी यहाँ से जो अपग्रेड्स आ सकते हैं वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए आ सकते हैं। करंट लेवल्स कुछ 1250-1300 के करीब के हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसमें और भी अपग्रेड्स देखने मिलेंगे और ये स्टॉक और भी परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। अगर एफएमसीजी में फोकस करना है तो वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान लीवर लीजिए या काफी सारे क्यूएसआर के स्टॉक्स हैं, वो अपने इम्पोर्टेंट शायद उनके प्राइस टारगेट्स के करीब आ चुके हैं।
इनमें हमें लगता है कि और भी अपग्रेड्स देखने मिलेंगे, लेकिन अगर एट करंट लेवल्स अगर मुझे खरीदना है तो मुझे लगता है कि आईटीसी को लॉन्ग करके चले, और यहाँ पे भी हमें लगता है कि अपसाइड बिल्कुल देखने मिल सकती है। तो वैसे काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन ये टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर फोकस कीजिए, और इन स्टॉक्स के ऊपर आप एक ऐसा व्यू बनाइए कि अगर मार्केट में बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर करेक्शन अगर आता है तो आपको इनको और खरीदना है, ट्रांचेस में खरीदे। और इसी वजह से हमने हमारे कई बार हमारे वेबिनार में यही बात बताई, हमारे जितने भी एनालिस्ट है वो भी यही बात करते हैं कि आपका फोकस फ्यू स्टॉक्स के ऊपर होना चाहिए, विद कन्विक्शन होना चाहिए। इस मार्केट में कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, फेथ होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ पेशेंस। आज अगर मार्केट 18,000 पे है और मैं यहाँ पे आके जितने भी मेरे पास मेरा जितना भी कैपिटल है अगर मैं एक साथ अगर उसके इन्वेस्ट करता हूँ तो वो काफी रिस्की है। तो साथ ही साथ पेशेंस बहुत जरूरी है इस मार्केट में, और ये पेशेंस हमेशा टेस्ट होता है। तो जैसे कि 18,000 के मार्केट में मुझे फुल्ली लोडेड मार्केट में नहीं होना है, और जैसे ही मार्केट अगर शायद 15-16,000 के करीब आता है तो उस वक्त मुझे विद कॉन्फिडेंस एंड विद पेशेंस की यस यहाँ से अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे नेक्स्ट 12 मंथ्स में और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप इन सब चीजों को अगर फोकस करेंगे, और इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम बार बार हमारे वेबिनार में बात करते हैं, अगर आप इन्हें नोट डाउन करके रखते हो और अगर आप इस पर्टिकुलर थियरी को अगर फॉलो करते हो तो आई एम वेरी मच श्योर आपके बहुत अच्छे पैसे इस मार्केट में बन सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जो राकेश जी है जिनकी अभी जस्ट एक जो एक सैड डिमाइस थी, उसके बाद आपने देखा होगा, आपने कई सारे उनको इंटरव्यूज पढ़े होंगे, कई सारे वीडियोस देखे होंगे। तो एक बात जो समझ में आती है वो यही थी कि जो उनका व्यू था वो एक लॉन्ग टर्म का था उनका, और एक जो दूसरा व्यू था वो था कि मैं पेशेंस रखूंगा। तीसरा ये था कि उनका इंडियन इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस था, और ये कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि पिछले 5 साल में था, उनका एक कॉन्फिडेंस पिछले 20 साल से था। तो उनको एक बात पता थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो इंडियन कॉर्पोरेट्स है वो यहाँ पे अपने आप को खुद को और वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हमने देखा ही है कि कुछ 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था रिलायंस इंडस्ट्रीज का इन 2007-2008, अभी 15 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। वैसे काफी सारे कंपनीज का है। तो एक बात समझनी है कि कॉन्फिडेंस, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे स्टॉक्स में आप अगर फोकस करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग डीफोकस्ड हो जाओगे। तो बस यही है इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये दीज आर द 4-5 stocks on which we can focus. Thank you, Shrikant sir. Now we can come back to Hemali. Hemali, I'll repeat the question for you. Tayyab wants to know target for Bajaj Finserv, and Nitin Kochar wants to know your view on PSU banks. Can you hear me now? Yes. Okay, so I'll be really quick. Target for Bajaj Finserv is 14,050 rupees. We have a reduce on that stock. On PSU banks, we have 5 stocks under coverage: SBI, PNB, Bank of Baroda, Union, and Canada. We are negative on PNB. We are positive on SBI. It is the safest amongst all. And the other 3, we are positive to the extent of it being outperformers than PNB. So if you are a safer investor, we suggest SBI. And if you like a little bit of risk, then we suggest the other 3. Sorry, Hemali? Yeah, if you are a safe investor, then we suggest SBI, which is the best buy. And if in case you have a little bit of a risk appetite, then you can go down the risk curve for Bank of Baroda, Canara Bank, and Union Bank in that sequence. Sure, thanks, Hemali. Moving on to next question. View on Apollo Hospital. Purvi, can you please share your? Thanks, Rini. So on Apollo Hospitals, we have a buy rating and fair value is 4,850, which is a 14% upside. If you see Q1 के numbers काफी अच्छे थे on across all parameters. Hospital margins भी काफी improve हुई है, occupancy rate improve हुआ है, उनका offline pharmacy business भी काफी अच्छा कर रहा है, and 24/7 digital platform है that is doing excellently well. So we feel it is, in the space, it's one of the best placed, and it will benefit from the evolving landscape also.
Apart from this, we feel that Aster and Max are other two hospitals which will also do quite well and are little inexpensive valuation. So one can also look that as an option. Thank you, Purvi. So quickly, I'll take two questions. Rudra Chauhan wants to know views on Bayer Crop Science. Pankaj sir? Yeah, sure. तो रुद्र, जैसा हमारा व्यू है बेयर क्रॉप पे हम नेगेटिव हैं, हमारा सेल व्यू है और जो हमारा टारगेट प्राइस है स्टॉक पे वो 4845 है। अगर स्टॉक की बात करें, कंपनी ने अच्छी रिजल्ट दी है Q1 में, 18% रेवेन्यू ग्रोथ, 19% अर्निंग्स ग्रोथ। लेकिन अगर Q2 की बात करें तो अभी तक जो रेनफॉल का पैटर्न आ रहा है वो काफी अनइवन टाइप है, और अगर वेस्टर्न साइड में फ्लड है, ईस्टर्न में ड्रॉट का सिचुएशन काइंड ऑफ थिंग इज देयर। तो अभी Q2 में भी अ चैलेंजिंग क्वार्टर फॉर द कंपनी, तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो वी कैन अवॉइड दिस स्टॉक रादर देन यू कैन फोकस ऑन अदर स्टॉक दैट वी कवर. We are positive is Sumitomo Chemical. Thank you, Pankaj sir. Now I'll take one last question. Shubham wants to know, does Bata have the potential to rise? Amit sir, can you please share your views? यारिनी, देखो, बाटा एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जिसके पास एक बहुत ही वाइड प्रोडक्ट रेंज है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। कंपनी का थोड़ा सा लगाड़नेस था, थोड़ा सा लेट बैकनेस था, उसकी वजह से स्टॉक काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा था। बट लास्ट 5 साल में कंपनी ने काफ़ी अपने ब्रांड को रिवैम्प किया है। कंपनी इज फोकसिंग ऑन फ्रेंचाइजी एंड मल्टी ब्रांड ऑपरेशन एक्सपेंशन, कंज्यूमर को रेलेवेंट कम्युनिकेशन पहुंचाना, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली रीचेक करना, डिजिटल एक्सपेंशन करना और काफ़ी सारे कॉस्ट सेविंग मेजर्स भी लिए हैं। इनफैक्ट आप Q1 के उसके नंबर्स देखो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए और कंपनी हैज रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ अराउंड 120 करोड़। तो हम लोग बाटा पे काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी का 15% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज फुटवेयर इंडस्ट्री में, और इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन इट इज ट्रेडिंग cheap compared to companies like Campus. So हम लोग बाटा पे पॉजिटिव है और हमारा बाय रेटिंग है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2200. Thank you, Amit sir. We end the Q&A session here, and I would like to call upon Shrikant sir for his closing comments. Yeah, I think it is better if we discuss about the market levels, क्योंकि आज हमने जो मार्केट को देखा है और मार्केट ने जो 15,200 से लेकर 18,000 तक का जो एक बड़ा जर्नी किया है, उसमें एक पार्ट अभी भी मिसिंग है। वो ये है कि मार्केट ने अभी तक की जो लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज है उसे पकड़ के रखा है। तो इस अगस्त के एक्सपायरी में अगर हम मार्केट को 18,150 के लेवल्स को अगर क्रॉस होते हुए देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि मार्केट में जो टेक्निकल ट्रेंड बना था, लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम की जो सीरीज बनी, उसे मार्केट ब्रेक करेगा। और अगर ये पैटर्न अगर बनता है तो फिर आने वाले दिनों में जो भी करेक्शन आएगा उसमें जो मार्केट में जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो एक बार और पोजीशंस बनाएंगे ऑन डिप्स और एट सपोर्ट्स। अगर यहाँ से अगर इन्हीं लेवल से अगर मार्केट अगर गिरने की अगर शुरुआत करता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा टू बाय ऑन डिप्स। बट 18,150 के लेवल्स को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि मार्केट में एक अच्छी तेजी मिलेगी। अगर मैं बाकी सेक्टर्स की अगर बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि इस बार बैंक निफ्टी ने जो कोरेस्पॉन्डिंग लेवल्स थे 18,150 के जो कोरेस्पॉन्डिंग लेवल्स थे अराउंड 39,000 के करीब के थे, 38,750 के करीब के थे, उसे क्रॉस कर लिया है। तो ये इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो चुका है। निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे डाइवर्जेंस आ चुका है। और इस बार की जो रैली है, लाइक हमने अक्टूबर से लेकर अभी तक मार्केट में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज देखी, उनमें हमने कई बार रिबाउंड भी देखी, लेकिन उस रिबाउंड में हमने एफआईएस की बाइंग नहीं देखी थी। आई एम टू से एफआईएस की बाइंग उस पर्टिकुलर रिबाउंड में मिसिंग थी। इस बार के रिबाउंड में एफआईएस की बाइंग है और डोमेस्टिक की सेलिंग भी उतनी बड़ी नहीं है। इनफैक्ट डोमेस्टिक ने भी कई बार अच्छे परचेसेस किए हैं। तो हमें लगता है कि इस बार का रिबाउंड है वो काफी सस्टेनेबल लग रहा है। और हमें लगता है कि अगर कोई भी करेक्शन अगर इस लेवल से आता है तो यहाँ से एक मैं 6 महीने का अगर व्यू लेता हूँ तो मुझे लगता है कि
16,800 के करीब मार्केट का बेस बन चुका है। आई थिंक 16,800 के नीचे के भी रिस्क नहीं है। ऑन इमीडिएट बेसिस हमें लगता है कि 17,700 से लेकर 17,500 के रेंज में हमें कुछ लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनानी है। अगर मार्केट में किसी भी रीजन से अगर उस लेवल्स के आसपास का अगर ड्रॉप आता है और अगर इन लेवल से अगर मार्केट अगर बढ़ते जाता है तो हमें लगता है कि 18,000 से लेकर 18,200 और 300 इन रेंज के अंदर हमें लगता है कि जो वीक लॉन्ग पोजीशंस अपने पास है या तो जो वीक इन्वेस्टमेंट्स है या तो जो लिवरेज पोजीशंस है उसे कम किया जा सकता है। तो ये मार्केट वैसे देखा जाए तो इस मार्केट की रैली को अगर एक मैक्रो फैक्टर्स के साथ अगर जोड़े तो हमें लगता है कि इस बार की रैली काफी सस्टेनेबल है, काफी स्ट्रॉन्ग इनफ है और बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल स्ट्रेटेजी रखिए। लेकिन अगर 18,200 के लेवल्स को अगर मार्केट क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर जो रैली में जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। थैंक यू। या रेडी। Thank you. I hope our participants found the webinar useful. Thanks for tuning in today. Have a good evening ahead. Thank you.